This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Weather. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा को लेकर हम हर रविवार सायंकाल 6 बजे आपके समक्ष आते हैं और हमारी समस्त ज्ञान परंपरा को समेटे हुए गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से ये विशेष ज्ञान सत्र, ज्ञान यज्ञ चालू है, चल रहा है। और हमेशा की तरह आज के हमारे इस ज्ञान सत्र में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी, जो कि मशहूर वैज्ञानिक हैं और भारतीय मूल के हैं, इन दिनों अमेरिका रहते हैं। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर रहे हुए एमिनेंट कॉलमनिस्ट मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं विठल जी नाडकर्नी, और बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रोफेसर श्रीराम जी दरबा। मॉडर्न मैनेजमेंट के ही प्रोफेसर गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वेदव्यास सेंटर फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट के डायरेक्टर भी हैं प्रोफेसर NM खंडेलवाल जी। और साथ ही हमें भारतीय मूल के ही इन दिनों अमेरिका रहने वाले प्रख्यात प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर अनिल जी भाटे हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह से हम हमारे विद्वत पैनलिस्ट के साथ इस ज्ञान सत्र में विवेचना कराते हैं गीता उपनिषद के श्लोक की। आज जो रेफर होने वाले श्लोक हैं वो हम आपके समक्ष रख देते हैं। चैप्टर 8 इस वक्त चल रहा है, यानी अध्याय 8 चल रहा है, और इसके श्लोक संख्या 6 से 10 आज विवेचित होने वाले हैं। हमारे विद्वत पैनलिस्ट से हम इन श्लोकों की विवेचना कराएंगे, लेकिन आज के एपिसोड की एक भावभूमि हम आपके समक्ष संक्षेप में रख देना चाहते हैं। वैसे तो आप हम सबको पता है कि गीता उपनिषद को हमारी ज्ञान परंपरा में सार तत्व यानी अमृत तत्व का ग्रंथ माना जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सूक्ष्म ज्ञान को बहुत ही सरल और आसान तरीके से भगवान श्री ने अपने भक्तों के लिए सुगम बना दिया है। और अक्षर ब्रह्म योग नाम का यह अध्याय है, अध्याय 8। और इस वर्तमान अध्याय में भगवान अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से हमें बहुत ही गहन और सूक्ष्म जानकारियां बताई हैं अब तक। लेकिन आज का जो एपिसोड है उसमें वो बतला रहे हैं कि, और ये इतना सूक्ष्म ज्ञान वो बतला रहे हैं जो कि आपको हमारे ज्ञान परंपरा में वैसे तो जो अलग अलग ग्रंथ हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन गीता जो है वो एक तरह की अनुक्रमणिका है, एक तरह की इंडेक्स है, जिससे आप पूरे के पूरे हमारी ज्ञान परंपरा के समस्त चैप्टर्स को देख सकते हैं और फिर विशद अध्ययन के लिए आप अलग अलग अपनी उसमें ब्रांचेज में जाकर अध्ययन भी कर सकते हैं। तो ये इतना दुर्लभ ग्रंथ, इसीलिए इसको सार तत्व और सार ग्रंथ माना जाता है। और आज का जो एपिसोड है उसमें भगवान बतला रहे हैं कि दुर्लभ जो परम तत्व है वो, जिससे कि आप यूं समझ सकते हैं कि यह तत्व वो तत्व है जो कि परम सत्ता तक पहुंचाता है व्यक्ति को, और परम सत्ता के उस लोक की प्राप्ति करवाता है। और इसीलिए आज का जो एपिसोड है वो व्यक्ति को दुर्लभ परम तत्व की किस तरह से प्राप्ति हो उसका मार्ग बतला रहा है, और विभिन्न प्रकार के स्वर्गों से भी ऊपर और जन्म जन्मांतर के इस चक्र से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका सीधा और आसान मार्ग भी आज भगवान बतलाने वाले हैं। इसलिए आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही विलक्षण रहने वाला है। और यहां भगवान ने उन साधकों को लिए, उन भक्तों के लिए विशेष ध्यान दिया है जो अपने नियत कर्म में लीन है, कर रहे हैं अपना नियत कर्म और संलग्न है, और सगुण जो भक्ति है उसके माध्यम से
वो अपने ध्येय की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो किस तरह से प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ सगुण भक्ति की तरफ भगवान ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो भक्ति के हमारे नवधा भक्ति के जो तरीके हैं उनमें आज का ये जो है मामला, ये सगुण भक्ति का, और सगुण भक्ति के द्वारा अपने कर्म करता हुआ व्यक्ति किस तरह से परम सत्ता को, परम तत्व को प्राप्त करे, उसका बहुत ही सुगम तरीका भगवान आज बता रहे हैं, जिससे कि वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका एक आसान तरीका आज भगवान रखने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम हमारे विद्वत पैनलिस्ट के पास चलते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा, प्रोफेसर अनिल जी भाटे। आपका स्वागत है, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। तो जैसा कि प्रोग्राम की रवायत है, परंपरा है, आज विवोचित होने वाले जो श्लोक हैं चैप्टर 8 के, अध्याय 8 के श्लोकात 6 to 10, श्लोक संख्या 6 से 10 पहले रिसाइटल होगा, इसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत कराएंगे। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और विठल जी नाडकर्णी साहब के पास चलते हैं। नाडकर्णी साहब, स्वागत है, कैन यू हियर अस? स्वागत। Thank you so much for having me, and it's an honor and a privilege to start this wonderful discussion. जैसे शर्मा जी ने कहा है, इन द प्रस्तावना में भी कहा है कि whatever one remembers at the time of giving up the body, at the time of death, O son of Kunti, one attains that state, being always absorbed in such contemplation. This is the 6th verse of the 8th Akshara Yoga Adhyaya of the Bhagavad Gita. Now, the great Sant Gyaneshwar Maharaj Ji, the 13th century saint poet of Maharashtra and one of the pioneers of the Bhakti movement, composed an incomparable commentary on the Bhagavad Gita, popularly known as Jnaneshwari or also Bhavartha Deepika. For the 6th verse of the 8th chapter of the Bhavartha Deepika, he uses the image of an elephant falling into a well to elaborate on this verse. Palata Pavanagati Dupavali Avachiti Kuha Padili. Since it fell, the immersion of this great beast is unavoidable. And being unable to climb out of the cistern, the jumbo inevitably meets its end in the well. Similarly, humans too cannot avert their rendezvous with death. And so they inevitably transit to the state that lies on the event horizon of their minds at the time of their demise. That is this electrifying image offered by the verse.
In this context, I would also like to, for the benefit of our readers who have heard this beautiful bhajan by Shri Brahmananda Swami, he also says the same thing. Jo bhaje hari ko sada, so hi parama pada paega. And why should this be? The short and simple answer of this is because Hari is the ultimate principle or the Paramapada. And so, thinking of this Supreme Being constantly, the individual gets to merge with this universal and thus is able to break the cycle of births, deaths, rebirths. So, the Swamiji further says, बैठ कर एकांत में ध्यान धर हरि का हरि चरण का फिर जन्म नहीं आएगा तू ही परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा. So once when you accept that premise of being and becoming, it follows that to merge into the Lord's infinite mercy and compassion after death, one needs to be constantly aware of this Paratattva with one's body, mind and soul. And that is exactly what the 7th verse of the 8th chapter says. Therefore, always remember me and also do your duty of fighting the war. With mind and intellect surrendered unto me, you will definitely attain me. Of this, there is no doubt. Now, for the 8th verse, Gyaneshwar Mauli offers the metaphor of a river that does not look back as it goes forth in full spate to merge itself and its individual identity with that of the ocean. So what does he say? Nate samudrache hovni thele, tevi chittachi chaitanya zhale. Does not the river become the sea itself, just as the individual mind merge with the universal to become pure consciousness, says Jnandevji Maharaj. As for abhyasa or practice, O Partha, when you are constantly engaged in remembering me, the Supreme Divine, you will certainly attain me. Practice does lead to perfection in this particular instance. Indeed, abhyasa or constancy of skillful practice is used as a synonym for yoga, which denotes the union of the individual and the universal in medieval and even modern Marathi. So, God is omniscient, the most ancient one, the supreme controller, subtler than the subtlest, the support of all, and the possessor of an inconceivable divine form. He is brighter than Aditya, the sun, and beyond all darkness of ignorance. So, one who at the time of death, with unmoving mind, attained by the practice of yoga, fixes the pranic or the life airs between his eyebrows and steadily and steadfastly remembers the Lord with great devotion, certainly attains him. Now, even for this, the Bhavartha Dipika is a very beautiful metaphor. Just as one knows not how and what happened to a steadily burning lamp that got covered by an earthen pot, so does the adept cast off his or her mortal coil to attain Sadgati with the Supreme. So, कब ये मिट गया, कब ये चैतन्य मर्ज हो गया, ये कभी पता ही नहीं लगा. लेकिन what is the base metaphor? That is that remember that you are not separate. You are, except a veil is separating you. Remember the original principle and merge with it, and this is the essence of the Akshar Yoga that is offered in these 6 to 10 verses. I am very eager to listen to my learned fellow panelists. Thank you so much. Right. ये जो भजन आपने याद दिलाया है, ये पंडित भीमसेन जी जोशी ने भी गाया, इसको बहुत ही खूबसूरती से गाया उन्होंने. बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो आपके लिए गाने वाला था, लेकिन I thought
then Please. that might serve as pest मैं इसीलिए control. याद दिला रहा हूं आपको कि कुछ सुन लें आपसे. So I'll say that in a fraction of a second. जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा. जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा. मेरे फेवरेट भजनों में से एक है ये. और मैं अरे भीमसेन क्या बात है सर. हाँ, भीमसेन It's a जी की आवाज में beautiful- इसको सुनता हूँ. बहुत जबरदस्त भजन मेरे को और लगता सर है. जी इसका एक गूढ़ अर्थ है इसमें. वो है कि ये भैरवी में है, जो यस, is sung at the end of the life's performance. सब कर्म करके, सब ड्यूटीज करके, जब एकांत में बैठ के, एकांत में ध्यान धर हरि का, हरि चरण का, फिर जन्म नहीं आवेगा, सो ही परम पद पावेगा. एंड दिस इज अमृतमय वाणी है भीमसेन जी की, जिसने इसको पावन किया है. थैंक यू. यस, डेफिनेटली. मतलब एक तो ये भजन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा लगता है जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे न तेरो. क्या बात है, क्या बात. सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध आरु वर गुरुदायक, राहु केतु की नाहि गम्यता, संग शनिचर होए. ऐसे स्थिति हो जाती है जब जानकी नाथ सहाय करे. एंड दिस इज इन अ वेरी ब्यूटीफुल राग कॉल्ड मांझ कमाज. ये जो मांझी होते हैं ना, जो खेवट के साथ, वो गाते हैं ये वेराइटी ऑफ खमाज, जब वो इससे उधर पार कर रहे हैं. सो इवन सी द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ पार करना, इस तीर से उस तीर जाना और अपने प्रभु को मिलना है उधर. तो इट इज जब जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो. जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध आरुवर गुरुदायक तेरो. राहु केतु की नाहि गम्यता, संग शनिचर होय उचेरो. जानकी नाथ सहाय. And of course, this is immortalized by none other than D.V. Paluskar. एंड देन बाद में पंडित जसराज ने भी बहुत अच्छे से गाया है इसको. बिल्कुल. यस. बट आपको भी ईश्वर ने आपको भी आरोह अवरोह और पूरा म्यूजिकल ज्ञान पूरा है आपको. प्रभु की कृपा है. बिल्कुल है साहब, आपके ऊपर सरस्वती आपके ऊपर और कृपावान हो, ऐसी हमारी शुभकामना है. प्रोफेसर बलराम सिंह साहब को आज एक्चुअली जर्नी में हैं और अभी फ्री करना पड़ेगा संभवतः. स्वागत है आपका. नमस्कार. Namaskar. I hope you can hear me. Yes, your audio is clear. Can you hear me? Yes. Okay, very good. So the point, I have a limited time. I'm in a flight right now. We'll be taking off in 10 minutes. But what I wanted to say is very interesting chapter, and that really one of the couple of points that may not come out from others, and I just wanted to cover very quickly. जो जी ने ध्यान करने के बाद ही वस्तुओं को प्राप्त होती है, तो उसमें एक जो निर्विकल्प समाधि की बात कही गई है. निर्विकल्प जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो कोई विकल्प नहीं रहता है. देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट. उसको हमको योग करके ही हम वहां पाते हैं.
और कर्तव्य का भाव जो हमारे अंदर होता है, जब हम भाव से कोई करते हैं तो उसमें नहीं ढूंढते हैं। मैं चाहता था कि निर्विकल्प जो समाधि है, निर्विकल्प भाव से जब हम कुछ करते हैं, इसका मतलब कोई भी नहीं है। तो वो थर्मोडायनामिक्स में जब हम एंट्रोपी एक ऐसी चीज हो जिसको रैंडम कहते हैं, रैंडमली जिस चीज को हम समझ रैंडमनेस मोर एंट्रोपी है, तो becomes zero, which means there is no randomness, पर कोई रैंडम नहीं। तो ये बहुत ना है कि हमको वहां निकलना है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है जो सामाजिक रूप से लोग हैं उसमें, अभी आपने होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन को सच है, खाली हिंदू को मानते हैं। हालांकि इसको 1202 में कहीं पे इसको अंग्रेजों ने शुरू किया था। डाइंग डिक्लेरेशन में इसलिए यहाँ पे कहा अंत में आपके जो मान्यता जो है वो ये सत्य जो है, जब व्यक्ति कोई विकल्प रह जाता है तो वो सत्य समझता है, सत्य ही बोलता है और सत्य ही होता है। तो सत्य है वही ईश्वर है, ब्रह्म है, जिसकी बात हम लोग बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको भाव को जो है वो इसमें लिखा है। नो सॉरी, भी ये युद्ध करो, युद्ध नहीं हेर पा बहुत कट कट कर आ रहा है और नथिंग इज क्लियर एक्चुअली, बहुत डिस्टोर्टेड है वॉइस। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं एक बार दोबारा से। आप कब तक लैंड हो जाएंगे जहां जा रहे हैं? और कुर्सी बांध। ये मतलब I just that I will sum up this. नो प्रोफेसर साहब को थोड़ा उसमें करिए। तो चलते हैं प्रोफेसर श्रीराम जी दरबा साहब के पास। स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी। It is beautifully called the Bhagavad Gita, the song divine. So ये भी पूरा हो गया है आज, ये इच्छा भी सबने। तो गीता को गान करने से ही उसका नाम the औचित्य अच्छा रहता है। So that's a good thing, and you have a very good voice and very relevant the parallels that you have taken, though in South we are not much aware of what you have read, but it was very nice. So having said that, Bhagavan seems to be reinforcing the same thing what he has already mentioned in the previous verses. So he's saying, of course, in the 6th to 10th shlokas, though a brief has been given, so he started with saying that yam yam smaran, whatever the person thinks about it, always, and especially at the time of, because at 2-3 places he is mentioned about antakalecha, antakalepi, or prayanakalecha, prayanakalepi. So these are the things that he has used on repeated occasions, and he is reinforcing the same thing here. So let us examine how it is, because in the previous episode we have discussed, if you the viewers and then if we remember, that whether going to just Kashi and then doing all sorts of sins throughout the life and just going and then dying at a pilgrimage center, and the most sacred place like Kashi, whether it will give us the Kailasha, or maybe in a Ajamila kind of an example from Bhagavad Puran, that entire life he had spent on all sinful activities, and at the end when he says Narayana, whether he, and it is given in the scripture, in the Purana, that he attained Vaikuntha. So does it actually happen? So for that also here it looks like Bhagavan seems to have given an indication,
एंड जो अक्लमंद को इशारा काफ़ी है. एंड फॉर पीपल हु आर intelligent and who are diligent disciples who would be able to understand the deeper meanings. And as I was going through and trying to relate it to the life situations, it occurred a different kind of an understanding, which I thought I would share here as a different life perspective, that which is practical for us to apply, because these kind of questions will come in आम आदमी के मन में ऐसा संशय या डाउट और क्वेरी उत्पन्न होने की संभावना होती है. सो इसीलिए so what is the use, at the age of after retirement I will study Bhagavad Gita, or maybe at the end, so kaise bhi, I will just repeat the name of the Bhagavan so that I will get the either a heaven or Vaikuntha or moksha. So but that's not correct. How is it possible, unless you are yam, that's what is starting. Whatever you think, tam, that's what you tend to become. And it's an important word that he had used is the tadbhava bhavita. And hence what you tend to become that. We have examined Jada Bharata's story in Bharat Puran, that in the last time of his death, he always thought and had an attachment to the deer in his ashram, and then he gets the birth of a deer in the next janma, in the reincarnation. Similarly, of course, we have talked about Ajamila. So in that context, if we tadbhava bhavitaha, so whatever we keep, we become what we think. Yad bhavam tadbhavati, tadbhava bhavitaha is saying in the first instance itself. How is it? So if you look at it, the most famous philosopher, French philosopher, René Descartes, he had said, and the very famous phrase of René Descartes is cogito ergo sum. I think, therefore I am. So it is, and also John Milton also says that nothing good or bad in the mind makes it so. Even Shakespeare has said that in a different context. So it is the mind which makes it, and whatever we think, that we tend to become. Our thoughts will make our behavior, and our behavior decides our personality and then character. Of course, if you stretch it, what we eat also is important to bring about our thoughts. That is what even in Gita, in some other Ajaya, he deals with it. So, I think, therefore I am. So even in the quantum philosophy, quantum physics and all, it is the observers and the perception becomes the reality. So it looks like a beautiful parallel to that. So how is it possible at the time of death? If you have to get that kind of a thought, it may be possible, it may not be possible. So that kind of examples, similes, metaphors have been given throughout our literature. So, and it doesn't just happen like that unless we are what we repeatedly do. And any personality or a character is just not a one-time affair. It's like saying that this weekend I went into a samadhi and then I come back and all. It doesn't happen in spurts just like that. It is a sustained activity. The sustenance is extremely important to stay in that. In that particular state, having reached, even in management also they say that just reaching the top is not enough, but staying there becomes much more difficult. That's what we say. To stay there, we have to completely focus, yukta chetasa, that's what he says. And mano buddhi, he's talking about the mind and the intellect have to be completely aligned. In fact, in the next slokas, he's also talking about how we have to focus on the Ajna Chakra between the Bhrumajja, at the Bhrumajja, between the center point of the eyes. That's where you have to concentrate. And it doesn't just by opening a book and then reading a particular Yoga Sutra or equation, it doesn't happen like that. It has to be through practice. And hence in the even in the 8th sloka, he's talked about Abhyasa Yoga Yuktena. And hence the practice, constant practice is important. Just to play, today is a World Cup football final. It doesn't, you cannot go and then just play the final. You have to win, and throughout the year you will have to so much of toil, so much of hard work, so much of practice
hours daily practice is required. So when to win just a small football kind of a game or a tennis at a Wimbledon or some other open, if you have to prepare so much so hard, how much hardship is required, how much of a abhyasa yoga or yoga abhyasa is required for a person to attain the ultimate consciousness, realization of the most indecipherable nirguna kind of a consciousness. If you have to, how much abhyasa and then yoga is required. So just at the prayana kale, if you think, but having thinking about this prayana kala, because there is a repeated mention about it. What is this prayana kala we are talking about? Because very often we all focus on only the destination. We tend to forget the journey. The journey is more enjoyable and then as important as the destination. Even the process is as important. Sometimes in our childhood also, when we, even if we don't get the answer in a mathematical problem, a question, for steps, so if you follow the algorithm and then the steps properly, the maths teacher used to award us at least 75% of the marks, even if you get the answer wrong. Similarly, the process and then the journey is also important. What is the journey? Life is nothing but a journey. What is life? Life is between janma, that is from the birth to the death. The life, the span which is spread across from the birth to the death on a time space continuum is called the life. So life itself is a journey. When he is talking about prayana kale, he is talking about the throughout the journey of the life. So it is just not a one-time activity of just getting into and getting some kind of a an experience in a trance and then coming back and then feel good about it or feel great about it, feel proud about it, or feel advertise about it to become some recognition or this is nothing to do with that. This is completely self-realization and surrendering ourselves to the omnipresent and then the omnipotent, that is in the 9th sloka. He has given in the 10th sloka when he says prayana kale, it is throughout the life. And yoga is nothing but a chittavrutti nirodha, that is the second sutra which talks about in Patanjali. And to focus on that, just like an Olympian, how he prepares, just like a football match which is happening today, how much of toil and Rome was not built in a day, and Messi has not become a greatest footballer in one day or 1 year just because of his a temporary one kind of a spurt of a performance. So it is a continuous process. So for that abhyasa and then yoga are required. This is how we would like to look at it, and the purpose of this whole journey of life is to attain purushartha, and purushartha is possible. And parama purushartha is of course the bliss and the liberation which we have studied, and some of the learned scholars know it, but knowing is just not enough. The practice is more important and more difficult. We can all in a WhatsApp university, everybody is a brahmagyani. But to Acharya Prabhavo Dharma, the most important thing about Dharma is the practice, the Abhyasa and then yoga. There is no other shortcut, there is no other way. The rest of it is only an individual perception. But to align ourselves, there is a beautiful example. Since we are only three of us, I'm taking a little more time, so that I can explain the text which is also there and also my context, that what I'm bringing today. I'm taking the liberty, Sharmaji. So that's how the life has to be looked at as a prayana kale is not just at the time of death and then you are going and then departing and then maybe going to some hell or heaven and all. That's a faith and then belief system. The prayana kala is the lifespan. That is the twist, that and the important thing as I understood. I wanted to share and then give Right. it. In the second one, once Bhate also speaks, so probably we can elaborate on that. Thank you. डेफिनेटली भाटे साहब सुन पा रहे हैं क्या? स्वागत है, नमस्कार. Namaskar. Yes. Well, everything has been explained so nicely and so well so far that I think I would just um, pick on just a few points here. As has already been said by both the speakers,
We have to practice a lot. We have to practice meditation for a lifetime, and only then we get into the habit of reaching the samadhi. So, samadhi is not a one time kind of experience. It has to be experienced again and again, again and again, repeatedly throughout. And that is absolutely true. But let me now focus only just a very important point, that in the shloka number 9, the Lord is talking about Sarvasya Dhataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat. So he is really mentioning the Achintya Rupam. And the purport here is that, of course, we can worship the Lord in various different ways. मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, जप जाप्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, etc., etc. All these things are, of course, valid modes of worshipping. However, in particular, in this 8.9 shloka, he is talking about Achintya Rupam. Now, Achintya Rupam is something that is beyond manifest. That means मंदिर में मूर्ति तो है, एंड प्रार्थना हुई है उस मूर्ति की, मीनिंग दैट भगवान अस्तित्व उस मूर्ति में है. दिस इज अग्रीड. But then Bhagavan is also talking about the Achintya Rupa. That is, what is there is manifest, and now he is pointing at something which is unmanifest, which is unmanifest. Achintya Rupam. So which cannot be even perceived, which cannot be normally, with normal perception, and which cannot be even thought about. It is Achintya. And here Bhagavan is at Achintya Rupam. Now, if the worship that we are performing, the puja and of the worship of the Achintya Rupam, then the question arises, how do we, you see, in order to worship the Achintya Rupam, it is necessary to reach it, right? Unless we reach that Achintya Rupam, how do we worship? That is a very big question. And this question has already been answered by Jnaneshwar. Nadkarni. He also read a few from the Jnaneshwari, the great holy of Jnaneshwar, called Jnaneshwari. And in the 6th chapter, he has pointed this, which can be which is to be used when we want to reach up to the achievement. And he has described the Kundalini meditation in chapter number 6 in Jnaneshwari. So the Kundalini exists at the Mooladhara chakra, that has to be aroused, and then the Kundalini rises through our spinal cord and goes up to the crossing the, which is in between the two. It goes up to Sahasrara chakra, which is in the brain, and there we obtain the cervikalpa, or and so up to there we reach up to the cervikalpa, and then from the Kundalini reaches the Brahmarandra, and when it is the Brahmarandra, then we reach the state of Nirvikalpa, as mentioned by Nadkarni, talked about Nirvikalpa. So I'm just pointing out what Dan said about reaching that experience. The Kundalini reaches the Brahmarandra, there we reach the Nirvikalpa, and that is the place, that is the experience where we find the Achintya Rupam, and that needs to be worshipped. So I just thought of taking some time in describing what Jnaneshwar
as about how we can reach the Achintya Room so that we can worship the Achintya Rupam as he mentioned in Shloka 9. Thank you. Hello. बोल लीजिए। It seems बोल लीजिए दरबा जी। Achha, okay. So just to extend from what Anil Sahab had said, in yoga balena, that is the word he has used. So how do we get that bala of the yoga? So it's the process which is explained is the correct in a Kundalini kind of a thing, because as a practitioner of Sri Vidya and then the Brahma Vidya, my understanding has been that how difficult is it to bring the Kundalini up to the Ajna. Here he is talking about the Bhruvor Madhye Samsthapya. He is talking about in the Ajna Chakra, and then from there on to the Brahmarandra and the Sahasrara Chakra. To take it, it's not as easy as it is given in the modern the yogic practices which are coming in exported new bottles from West. So, but while it is given, how difficult it is. It takes so many janmas, but a lot of yoga bala. If you have to get basically two nadis, which I mean many of us know, the ida and then the pingala, which start from the, because it is in a dormant kind of a stage in 3.5 kind of a circular form, the in a serpentine kind of a thing at the Mooladhara, and from there to थाप करने के लिए और योग बल की बहुत चित्तवृत्ति निरोध की और ये मियर प्राणायाम एंड देन द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये भस्त्रिका अनुलोम विलोम से ये सुदर्शन क्रिया या आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग एंड ऑल, इससे इतना आसान नहीं है. So it is very difficult, but that how is it possible is because it is a constant practice to bring this ila and then pingala. उसमें हमारे दर्शन में दरबा साहब जी, हमारे दर्शन में हमारे पूरी इसकी परंपरा मौजूद है, और हमारा दर्शन ये कहता है कि किसी समर्थ गुरु के समक्ष बैठकर ही इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके बाद ऐसा नहीं कि आप अकेले किताब पढ़कर कुछ काम कर लें या कंप्यूटर पे कोई क्लास करके, क्योंकि हमारा समझ जो ज्ञान है वो उपनिषदीय परंपरा पर है, और उपनिषद का मतलब यही है कि गुरु शिष्य के सामने बैठे और उससे उनसे सीखे, और गुरु करने का भी भागवत पुराण में गुरु किसको बनाया जाए इसके बारे में भी पूरी व्यवस्था दी गई है कि गुरु को जांचो पहले, लक्षण बताए गए, गुरु के लक्षण हाँ, तो पूरी व्यवस्था मौजूद है. अब बात ये है कि आजकल कैप्सूल कोर्स भी चलते हैं ना, और मार्केटिंग का जमाना है. हाँ, क्रैश यू विल क्रैश ओनली. आप देखिए जरा, आपने वेस्ट का नाम लिया, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, फिर भाटे साहब कुछ कहना चाहते हैं. हमारे ज्ञान परंपरा का सिस्टम क्या हिसाब का दिया हुआ है, हमारे यहाँ एक नियम बनाया कि जूठे बर्तन रात को आप नहीं छोड़ें. बहुत सिंपल सी बात है, और आपके पूर्वजों ने, आपके शास्त्र परंपराएं आपको सिखाया कि आप कभी भी घर में जूठे बर्तन पड़े हो तो आप सो नहीं सकते हैं. पहले सारे बर्तनों की सफाई होगी फिर आप सो सकते हैं, ये नियम था पहले. अब आप देखिए अमेरिका में, यूएस में एक खोज अभी रिसर्च हुई है, जूठे बर्तन घर में पड़े रहने से कई तरह की बीमारियां उनके हो रही हैं. ये रिसर्च में आ चुका है. अब हमारे यहां इसको सिंपल कह दिया गया, अब बाद में इसको अंधविश्वास मान लिया गया कि यार ये तो बेकार की बात है, इसमें क्या रखा है, घर में जूठे बर्तन पड़े होंगे. अब रिसर्च जब तक सामने नहीं आएगी तब तक कोई चीज मान्यता, वही वाली बात है कि आज की दुनिया में जो लाइट जो है, नॉलेज कहां से आ रहा है, नॉलेज आ रहा है वेस्ट से. तो वहां जब तक इन बातों को स्वीकार अंगीकार नहीं किया जाएगा तब तक आपके हमारे जो लोग हैं वो इसको मानेंगे नहीं. तो ये रिसर्च आ गई ना कि भाई सिंक को खाली करके सोइए. हमारे यहां एक नियम था पहले, आपको ध्यान होगा कि गूंथा हुआ आटा जो है उसको आप छोड़ के सो नहीं सकते, उसको मुर्दे के बराबर माना जाता है. अब गूंथा हुआ आटा जो है उसमें बैक्टीरिया का जो अब आ गई ना, रिसर्च आ गई ना कि इसमें बैक्टीरिया तेजी से फैलता है, फंगस.
अब वो जब तक रिसर्च नहीं आएगी, जब तक हमारे लोग मानते नहीं। तो भाटे साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी भाटे साहब। Yeah, well, can I take a few minutes या just प्लीज, to वी हैव, explain how आज तो my journey? आप ही आप हैं आज तो। Yeah. So let me mention how what was my journey. ये जूठे बर्तन जो है ना, that is actually a very good metaphor. हाँ, तो जूठे बर्तन क्या होते हैं? हमने जो लाइफ में जो कुछ भला बुरा जो कुछ किया है, वो सब जूठे बर्तन होते हैं और उनको साफ करना पड़ता है. So long time back, I realized that Vipassana is a method that has been, developed by Lord Buddha. And unfortunately, my research says that Buddha was not against Vedas, even though it is portrayed in that manner. So I figured that actually Buddha was a great psychologist, and he has mentioned or he has developed a process by which we can remove all the sanskaras that are on our subconscious mind. And removing all the sanskaras, the previous sanskaras from the subconscious mind, that is exactly what is mentioned in Jhute Bartan Saaf Karna. So I started practicing it and I did it for many, many years very diligently. What it does is, I realized that Ashtanga Yoga में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो स्टेप्स कहिए है, विपස්සना actually took me up to the level of प्रत्याहार. प्रत्याहार हो गया विपස්සना के following vipassana, and then it took me directly into dharana. So I found that Kundalini rises when we do the anapana. Kundalini goes up through the spinal cord while we are doing vipassana. These are my actual practical experiences, and I have gone through these experiences. However, Kundalini can go only with the help of vipassana. It can go only up to the Bhumadhya. It does not go beyond that, actually. That is what I realized. However, I went on practicing a lot. And then from 1973 to 1978, 5 years, I did lot and lot of vipassana. In 1978, I found that कि काशी से एक योगी बम्बई आ रहे हैं. And how I found it is there is a funny story. I read a small news item in Times of India that योगी श्री सीताराम दादाजी आ रहे हैं काशी से बम्बई 4 दिन के लिए. And at that time, you see, Times of India is owned by the Jain family, and there was a very senior lady in the Jain family. Her name was Indu Jain, and Indu Jain was a disciple of Dadaji Sitaram, and she had invited him to come to Bombay from Kashi, and that's the news that I found. So I went to him, and I was told that he gives Shaktipat. So I went to him, and he just put his hand on top of my head just for half a second. And my Kundalini already was aroused, and he straight away pulled it up, and it went into Brahmarandra straight. And he just told me, just sit here with closed eyes, और इतना ही बोले कि हमारे हाथ का ख्याल करो बस. And I did that, and within a few minutes I went straight into Nirvikalpa Samadhi, and that was my first experience of Samadhi in my lifetime. And then, so the point is that it is Shaktipat which enabled me to go from the Bhumadhya. My Kundalini was going only up to Bhumadhya, but from Bhumadhya to Sahasrara, that journey happened only because of Shaktipat. तो गुरु की कृपा जो होती है ना, वो यही होती है. With your own efforts, you can go up to here, yes, but from here to here, from the Bhumadhya to Brahmarandra, that journey is possible only because of Guru Kripa. कि ऐसा कोई आदमी मिल जाए कि जो शक्तिपात दे सके. और I am thankful to
the lady, Indu Jain, she had invited him. And I was the beneficiary because I went to him and Dadaji Sitaram. Dadaji Sitaram was a Pattashishya and Manasputra of Pandit Gopinath Kaviraj. So all this came from Kavirajji. So this is the basic process of Kashmir Shaivism, which was rejuvenated by Kavirajji in Kashi, and that parampara, that benefit came to me. So I was the beneficiary of that. The point is that you require a guru krupa, somebody who can give you Shaktipat and who can take your Kundalini from Bhrumadhya up to the Sahasrara Chakra. वही बात तो हम कह रहे हैं ना, वही बात हम कह रहे हैं कि बिना गुरु की कृपा के ये जो कठिन मार्ग है, ये कोई मतलब इसको ध्रुव मार्ग कहा गया है। सामान्य जीवन ही व्यक्ति ठीक से नहीं जी पाता है, तो आप सोचिए जरा परम सत्ता की वहां तक पहुंचना तो एक बहुत बड़ा कमाल का मामला है। इसलिए गुरु बिना कुछ होता नहीं है इसमें, और परंपरा यही कहती है, हमारा नॉलेज ट्रेडिशन यही कहता है कि आप किसी समर्थ गुरु के पास जाइए और गुरु की पहले परीक्षा लीजिए। जी, तो वो वाली बात। So the point, sir, vipassana takes you halfway. मीन्स संप्रज्ञात समाधि तक विपස්සना लेके जाती है, बट बियॉन्ड दैट टू गो टू असंप्रज्ञात समाधि यू रिक्वायर ए गुरु एंड शक्तिपात। बेसिकली एक बड़ी नदी की, एक महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, आना आपको महानदी में ही है जी। और महानदी सनातन के अलावा कुछ है नहीं। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। सुभाष जी may I add एक इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग बात जो छेड़ी गई हमारे ये विद्वान प्रचुर डिस्कशन में कि व्हाट इज रियली इन्फिनिट और बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स, उसको कैसे ध्यान में या अपने कॉन्टेम्पलेशन में लाया जाता है। And there has been some confusion created, where people have been accusing Sanatan tradition as mere idolatry. You are aware of that, that people मूर्ति को पूजते हैं। और एक और नाडकर्णी साहब, एक और क्लैरिफिकेशन हम करना चाहते हैं कि इसको देखिए, आप एक नैरेटिव दिया गया है कि इसको एक तो हमने इंडिक नॉलेज कहा है, ये अपने आप में डेरोगेटरी है। सनातन को इंडिक कहना डेरोगेटरी है, ये एक अब्यूसिव लैंग्वेज है एक तरह की। सनातन को आप इंडिया से बांध कैसे सकते हैं? नहीं, ये सुभाष जी इसकी महती, जो ये इंसाइट की महती और इंडिक कहने का एक मिनट और लूंगा, आपका राउंड है, आप ही का राउंड है, यू विल टेक योर टाइम। बिल्कुल। इंडिक कहने का मतलब आप समझते हैं ना कि हीदन्स हैं, मूर्ति वाले लोग हैं, सांपों की पूजा करते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। इंडिक का अर्थ ये है, इंडिक नॉलेज का मतलब आप ये समझ लीजिए। जी हाँ, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि श्री कृष्ण भगवान के पोते वज्र महाराज जी ये प्रश्न उपस्थित करते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। मार्कंडेय गुरु उनके बैठे हैं सन्निध में, और ही रूप गंध रसहीन शब्द स्पर्श विवर्जित पुरुषस्य त्वया प्रोक्तम रूपम इदम कथम। कैसे, हाउ डज द formless, which is beyond form, which beyond odor, beyond touch, whatever, how does it? And the beautiful answer given by Guru Markandeya ji, the entire universe should be understood as the Vikriti, modification of the formless Prakriti. The worship and meditation of the Supreme is possible for an ordinary human being only when the formless is endowed with a form, and that form should be full of significance. The qualities that we admire in a divine being are within us, and when we worship the images that personify such attributes, we awaken those divine aspects which are latent within us. When we are filled by that grace or anugraha, there is no space left for base desires and thoughts. We become that
deity. तत्वमसि का जो ये गर्भितार्थ है ये है कि you are that actually, and you require a madhyam or a medium initially for a focus. Now, Bhate Saab is absolutely right. There are techniques or tantras that need to be imparted, but they are also to be imparted to the right person, because in the wrong hands it can do tremendous self-harm also. Yeah. You know, people, I have known people losing their complete sanity, relatives of mine who have gone without Guru Padeshena Margena, और फिर गुरु आपको टेस्ट करता है कि आप लायक हो या नहीं. नहीं तो चला मुरारी या समाधि लेने एंड जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, फिर ऐसे हो जाता है फिर. Yes. So all the points made by my learned friends are absolutely valid, and it is also that look at the subtlety of the question put by Maharaj Vraja to Markandeya. How can something that is formless acquire form? He says वो आपके ordinary intelligence को facilitate करने के लिए है. उसको एक बार आपका लगन लग गया, फिर वो पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो, व्यक्ति अमोल, it is वस्तु अमोल, दी मोहे सदगुरु. Without that Sadguru, Bhavasagar Tara Ayo is not possible. I'm saying it because why is it Anmol? Why is that Anmol Hira? Because they give you these Guhya Tantra secrets for the proper Adhikari Vyaktis. And also our beautiful tradition classifies people. हीन दर्जे का एक है साधक, मध्यम दर्जे का है, एक उत्तम दर्जे का है. And the time taken by these people to reach that gnosis and enlightenment also differs from their innate abilities and also possibly their past karmas also. Because कई जन्मों से फिर आपने जब भी ये साधना करके आपको तैयार किया है, then finally you come at एक दृष्टि में फिर शक्तिपात हो जाता है. जैसे लीला चरित्र में देखते हैं हम कि the Guru throws a bhajiya, Chakradhar Swami just catches it, and all the vidyas and all the states come to him. And then he says that I'm going to expose only this and I'm going to hide the rest of them. Parashakti bhi aata hai, Apar Shakti bhi aati hai. This is a great grand science, and I do ek arz karunga main. This is what has prevented the culture of India from being overwhelmed despite so many aggressions. It is a positive, dynamic, absolutely reality-oriented insight which is indestructible. And I'm not saying it from a defensive point of view. You see the empires that we have created. Not ek khadg bhi na kiya hua hai. Look at the number of people who are in the West who are validating us, our philosophies, whether it is James Wood's translation or Sir James Mallinson's translation or whoever it is, because they are drawn like the मृग शावक जो आते हैं ना तोड़ी राग के पास, वैसे आ रहे हैं वो लोग. क्योंकि ये ऐसी बीन बजाई है ये मुरलीधर ने, तो पूरे विश्व को ये इनका आलाप समेट रहा है, प्रेम का संदेश. ऐसा है सर. एक बात हम हमारी तरफ से भी कह देना चाहते हैं, एक इंटरजेक्शन है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा. आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है. एक वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं मिस्टर तरार हैं, पाकिस्तान के हैं. पाकिस्तान अमेरिका कांग्रेस के नाम से उन्होंने कुछ बना भी रखा है और वो वहां की पॉलिटिक्स में भी हैं. ये जो ट्रंप वाली पार्टी है उसमें वो कुछ हैं, कुछ वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं. उनका एक में कुछ सुन रहा था कोई प्रोग्राम पाकिस्तानी टीवी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि वो कोई बांग्लादेश की वो जो थी सरेंडर था उसके ऊपर बोल रहे थे कि ऐसी शर्मनाक सरेंडर कभी नहीं हुई इन द हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग मॉडर्न वर्ल्ड, मिलिट्री वॉर्स. विजय दिवस, विजय दिवस के बारे में. तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ये हारी हुई कौम है
और हमारे ऊपर आए लोग, इन्वेडर्स आए और हम हारते गए। तो वो कट्टर मुसलमान है, वैसे सुन्नी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान है, और उन्होंने कहा कि मैंने मेरे बारे में, मेरे डीएनए के बारे में, मेरे पूर्वजों के बारे में खूब खोजा है। तो मैंने पाया कि मैं एक तो जाट हूं, पाकिस्तान का हूं, और हम अब जाट हैं तो पहले हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। तो अब इसमें हम जो पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, वो मिस्टर तरार जो है वो सम्मानित व्यक्ति हैं, वो उन्होंने बात कही अपनी, और किसी की जाति और किसी के रिलीजन का हम कोई वो नहीं कर रहे यहां पर। लेकिन एक बात जरूर हम कह देना चाहते हैं, एक बात जरूर हम कह देना चाहते हैं कि जिस दिन ये दुनिया क्रिश्चियनिटी के और इस्लाम के फोल्ड से बियॉन्ड देखना शुरू कर देगी, उस दिन उनको सनातन के पास ही आकर शेल्टर मिलने वाली है। इसके अलावा न तो उनके पास हिस्ट्री है, न उनके पास में कुछ और है, न उनके पास में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, कुछ भी नहीं है। ये सब बनावटी बातें चला रहे हैं। आप देखिए जरा, ये गुण का जो शब्द है वो जीन है, सेल्फिश जीन, और हम कह रहे हैं त्रिगुणात्मक सृष्टि है, 3 गुण हैं, तीनों के तीनों अपना काम करते हैं। वो क्या सेल्फिश नहीं है? वो सेल्फिश नहीं होते तो काम ही नहीं होता आपका। माया जिसको हम कहते हैं, माया तो पूरी की पूरी सेल्फिश है। तो ये दुकानदारी लगा रखी है लोगों ने, अपना अपना बेच रहे माल और बिक रहा माल ये और है, क्योंकि दुनिया में हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह से सोचते हैं लोग बात। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो है पूरा का पूरा मसला सनातन के पास आना पड़ेगा। इसमें इंडिक जो मसला है, इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको एक इंडिक कहकर हम एक महदूद कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, और एक नॉलेज, एक ट्रेडिशन, परंपरा का जो हमारा श्रुति परंपरा से आ रहा है, हमारी स्मृति की परंपरा से आ रहा है, उसको हम एकदम लिमिटेड उसमें कर देते हैं। वो ठीक नहीं है। तो अब देखिए आप, इंडिया जो है, अब इंडिक को यदि देखेंगे आप, तो इंडिक होते 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 सिमट गया है। आज आपका जो इंडिया है वो तो वो इंडिया नहीं था जिस इंडिया की हम बात करते हैं, यानी भारत की बात कर रहे हैं ना। हम तो जम्बूद्वीप की बात कर रहे हैं, हम तो आर्यव्रत की बात कर रहे हैं ना। सनातन तो इंडिया की बात नहीं करता। हाँ बिल्कुल सर जी, मैं एक अर्ज करूंगा इसमें कि द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड अखंड भारत एंड टाइम्स इवॉल्व, एंड इफ यू सी द करंट रेट ऑफ घर वापसी दैट इज टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, people are astonished, people by the thousands. There was recently a survey done in our neighboring country, and over 63% people said that they would want to go back to the religion of their forefathers. I am not taking specific names for obvious reasons, because we do not want to spread any... इनको तो छोड़ दो आप। ग्रीस में क्या हो रहा है? ग्रीस के लोग ये कह रहे हैं कि we were not Christians बाबा, हम जो थे, हमारी पूजा पद्धतियों को तरफ जाना है हमको। यदि वो अपनी पूजा पद्धतियों की तरफ चले गए तो दैट इज द सनातन। करेक्ट। और ये जो पेगन करके उनको जो मजाक उड़ाते ना उपेक्षित किया जाता है, वही है। What they would do is they would just put a cross on the forehead of Aphrodite or Hera or whatever, and फिर वो उनका फिर परिवर्तन हो गया। लेकिन अभी with greater insights in psychology, in physics, in astrology, astronomy and genetics and all that, now people are understanding the depth and subtlety and the compassion of Sanatan. The most important thing is compassion, जो है इसमें. It is, and we can talk much about it, but I'm very happy to say that under the dynamic leadership of Mr. Samir Jain, we have launched this Akhand Bharat Times Evolve initiative for sparking this kind of discourse, which shows it's a discourse that transcends political boundaries. तो पूरा विश्व समेटने के लिए, पूरा यूनिवर्स समेटने के लिए, and not in a conquisitory, Herman Cortes manner. It is without a sword, without any proselytizing, by sheer love and logic, we should be able to take this forward. And I'm looking forward to add to this as our experience grows in these ventures. Thank you, sir. इसमें 2 बातें और कही आपने, उसको भी थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। मीराबाई के बारे में आपने कहा, मीराबाई ने अपने जीवन में इतने गुरुओं के दर्शन किए हैं। मीराबाई की यदि कोई हिस्ट्री पढ़े तो बहुत सारे गुरुओं के पास वो गई है और गुरुओं से ज्ञान लिया है। और तत्कालीन समय के कंटेम्प्रेरी टाइम का कोई भी गुरु जो है वो मीरा जी के मतलब मीरा जी उनके सानिध्य में न गई हो, ऐसा नहीं लगता है।
दूसरी बात, शब्दों की बारे में क्या आप क्या दिखा रहे हैं? सॉरी, अभी मेरे हाथ में मेरे कलीग ने एक फैंटास्टिक किताब भेजा है. She was in the US. Spiritual राइट, Heroines of India. दिखा देना बुक को एक बार. तो स्पिरिचुअल हीरोज, heroines. हेरोइंस, वेरी गुड. हाँ. So this talks about that neglected aspect of how heroic were India's women, including Mirabai यस, डेफिनेटली. and Muktabai of Jnaneshwar Bhagini. सो मेनी लेगेसी है हमारे पास. तो Yes, उसमें Akka कोई शक Mahadevi नहीं है. is there, दो पॉइंट और Dal Ded is there. 2 पॉइंट और यहाँ Yeah. क्लियर करा. आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं. आपने शब्दों की बात करी. पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो. यहां धन जो है वो भगवान के लिए कहा गया है, भगवान राम के लिए कहा गया है. यानी मैंने वो धन प्राप्त कर लिया है. अब आप देखिए हमारे शब्दों की संरचना देखिए. शब्द है निधन. व्यक्ति बिल्कुल. खत्म होता है, उसमें से क्या निकल गया है? धन निकल गया है. और बिल्कुल. व्यक्ति को हमारे वांग्मय में रथी कहा गया है. व्यक्ति जो है वो रथी है, और जो तपस्वी है वो महारथी है. अब रथी जो है, बिल्कुल. उसमें से जो रथी है वो जब निकल जाता है तो अरथी हो जाती है. बिल्कुल. ये जो हमारे क्रिमिनेशन के लिए जब लेके जाते हैं 4 व्यक्ति, तो उसको अरथी कहा जाता है. अरथी. अरथी. अर्थी नहीं बोलते उसको, अरथी है असल में वो, जिसमें से रथी चला गया. अब वो मिट्टी है. अब तो वो केवल हार्ड मास का पुतला है. जैसे रथ को हम लकड़ी से बनाते हैं, या सोने से बनाते हैं, या चांदी से बनाते हैं, तो रथ में बैठने वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है ना. रथ का क्या लेने देना है? तो रथ में से, शरीर में से रथी निकल गया, इसलिए अरथी है वो. आप देखिए शब्दों की संरचना देखिए. ये जो धन की बात आपने बताई, इससे वो मुझे याद आया कि निधन हो जाता है, यानी अब इसमें से राम निकल गया है. हमारे राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा, पंजाब में कहावत है कि यार इसका राम मर गया है. अरे महाराष्ट्र में भी है ना? महाराष्ट्र में भी है. राम मरना इज Yes. एक्चुअली टू डिपार्ट. ये मतलब जो ये खत्म राम है बात नाम भी. जो है, मतलब हाँ. यह जो आदमी है, कहने का मतलब क्या है यहां पर, जो झूठ बोलता है, जो पापाचारी है, जो कभी भी अपनी जबान पर नहीं है, उसके बारे में कहते हैं कि यार इसका रामड़ा मर गया है, इसका राम मर चुका है. बिल्कुल. यानी ये खत्म है आदमी. बिल्कुल. ये डेड बॉडी की तरह है, क्या लेन देन है इसका. तो मतलब इस तरह की जीवनामध्ये राम नाही. अब एक और वो बात भी जी हाँ. जी, आप कंप्लीट कर लीजिए. सॉरी. नहीं सर जी, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रही है. प्लीज. तो अब एक जोडियक कैलेंडर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब आने वाला, हमारे छुट्टियां लागू हो चुकी हैं. अंग्रेज के जमाने की व्यवस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट की कोर्टों की छुट्टियां हो गई हैं. आप देखिए जरा हम घोए जा रहे हैं उस व्यवस्था को, तो इसलिए याद आ गई है. वो भी हम बात रख देते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए. सब जगह छुट्टियां हो गई हैं, नए साल की धूमधाम है, नववर्ष की पार्टियां भी वेकेशन बेंच नहीं रहेगा. हाँ, वो भी नहीं रहेगी इस बार सुप्रीम कोर्ट में. तो अब इसमें देखिए आप, जोडियक कैलेंडर 10 महीने का कैलेंडर हुआ करता था. अब कोई कारण था उसका, ऐसा नहीं है उनको कोई गाली नहीं बक रहे. ज्ञान जब पहुंचा वहां तक, तो उसके पहले क्या हुआ था वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, लेकिन 10 महीने का कैलेंडर था. आप देखिए इतनी विषम परिस्थितियों में नववर्ष है. नववर्ष तो आएगा हमारा मार्च के आसपास, नवरात्रि के बाद में नववर्ष आएगा. अब कैसा मौसम, शानदार मौसम, खुला आसमान, और उत्सव मनाने का भी. अब रातों को आप अंधेरी रातें हैं, सर्द रातें हैं, इतनी सर्द रातों में क्या उत्सव मनाया आदमी. अब ये दिसंबर है, 2 महीने जोड़े गए. बाद में जब कैलेंडर्स गए, तो कैलेंडर भी शब्द वहीं से आ रहा है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन जो 10 महीने के बाद 2 महीने जोड़े गए. एक जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई जोड़ा गया, और एक ऑगस्टस के नाम पर अगस्त जोड़ा गया. और दोनों के दोनों ने अपने आप को बाकी महीनों से ज्यादा बढ़ा. मतलब 30 से ज्यादा मेरा 31 का करो, तो आप देखिए साइमल्टेनियसली 2 महीने 31 के आते हैं. वहां भी गणित फैल है. तो जोड़ना था वो जोड़ दिया. अब एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ये कर दिया है. तो ये हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टीज का इनविटेशन दे रहे हैं कि न्यू ईयर की पार्टी में आना आपको, तो इसलिए हमने ये चर्चा छेड़ी है. भाटे साहब कुछ कह रहे हैं, फिर दरबा साहब कुछ कहेंगे, कंक्लूड भी करेंगे. Just a few minutes ago, सुभाष जी ने एक बात बताई. I am very much with that. He said that we have to focus our attention away from the Indic and take it
to Sanatana. That is what he said. And I am 100% with him on that issue. And there is a lot that I can mention. अभी ये कार्यक्रम में तो टाइम बिल्कुल थोड़ा होता है, but from time to time I would like to come back to this issue as mentioned by Subhash ji, and गीता के माध्यम से we will try to see how we can travel from Indic to Sanatana. That's what I wanted to mention. बिल्कुल ठीक कहा आपने. अभी हम करीब 60 के आसपास एपिसोड हमारा चल रहा है, 60 और 70 के बीच में. आई डोंट रियली रिमेम्बर कौन सा एपिसोड आज, मेरे को याद नहीं है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट ये 100-200 से भी ज्यादा एपिसोड चलने वाले हैं, इसलिए यू डोंट वरी. 65 आज सर, आज 65th है. हाँ 65 है. हाँ वही 20 का 60 के 70 के बीच का, तो 65 है. ये 300 एपिसोड तो इसी के चलेंगे. मैं बनियागिरी कर रहा हूं सर. ज्ञान के बाबत में, ओनली इन दिस, नॉट अदरवाइज. आई नो अदरवाइज इट इज ऑल लव, यूनिवर्सल लव. यस, एंड थैंक यू फॉर दिस योर अवेयरनेस कि आपको याद रहता है. मेरे को खुद को याद नहीं है, जबकि मैं मॉडरेटर हूं. जी, तो दरबा साहब कुछ कहेंगे? कह लीजिए, अनम्यूट कीजिए. तो आवाज It's a very good point that you made, and Bhate Sahab bhi wahi, he is repeated. The Indic and Sanatan is a beautiful point that you made. जो हम सनातन बोल रहे हैं विश्व ज्ञान है, ये भारतीय सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो विश्व ज्ञान इसीलिए है. जब इंडिक ही हमारा नहीं है तो करेक्ट, that word itself हमारे ऊपर थोपा गया है. And we had several debates last month also, Hindu, Indic, India, वगैरह. I mean, let's not get into that. But having said that, ये Sanatan is a reference to the ancient, and not only in terms of the Kala, Desha kind of a thing, ancientness, but also from the Anadi, basically. कहने का मतलब ये है कि अनादि, that is Sanatan basically. So it is come. So Anadi ka, the fundamental foundation of the Sanatan Dharma is Veda. Because Aparushan and the first knowledge, the supreme knowledge, and the infinite knowledge is Veda. Vedakilam Dharma Moolam. So Veda is the basis. And Veda is the only Samyak knowledge. That's why here also in Sloka 9 also is beautifully given Samyak. That is the word. How do we get that Samyak? Unless we give up the interplay of our mind and then our intellect. The so-called intellect gives us ahankar, and then we get blinded, and then we give different interpretations and understandings and prejudices coming out of it, and hence you just give up your attachment to your mind and then the intellect, and then have the samyak jnana. इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान हमें सद्बुद्धि दे. Sadbuddhi. Same thing is the meaning which is given in the Parama mantra, that is Gayatri mantra, is Dhiyo Yonah Prachodayat. That's what it says. So भगवान हमें सद्बुद्धि दे, and hence सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है. And सम्यक, that's what he's saying. And yoga balena, just not anything, and it is continuous. Bhagavan has said. And having said that, and another baat, prastavana आई है आज, whether Sanatan Dharma is only a mokshagami kind of a jnana yoga, jnana devati kaivalyam, they say it is a very self-centered kind of a thing, because the ultimate achievement purpose is self-realization. It is all about self. Wrong. Because that's where I think, like Bhate Sahab had said, and then I want to differ with that, Buddha is definitely, it's an Avaidic dharma or mata. Because today we discussed about music also. Jaydeva, who is a very celebrated musician and a scholar from Orissa, and he has written Dashavatara Stotra. In that, इन्होंने क्या बोला बुद्ध के बारे में, निंदति यज्ञ विभेद कर श्रुति जातम सदय हृदय दर्पित पशुघातम केशवाधृत बुद्ध शरीरा जय जय देव हरे. He is very clearly says nindati yajna vibheda, because the purpose, the basic tenet of Veda is yajna. Yajna is not only just pouring some ghee into it.
any project, any work that you do, and yajna is what do you वो call yajna? दरबा साहब एक सेकंड What do we call yajna in English? एक मिनट रोक रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट रोक रहा हूं। Yeah. इसका कारण ये नहीं है कि बुद्ध की जो फिलोसॉफी है वो बेसिकली ज्यादा फिलोसॉफी बन नहीं पाई थी। पहला काम अशोक ने कराया, पहला महासम्मेलन जो है बुद्धों का वो अशोक ने कराया। अशोक ने क्यों कराया, इसकी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। अशोक के साथ में बुद्ध जो व्यापारी था उसने संधि करी है, और संधि करने के बाद ये कहा कि मेरी इस बिटिया से शादी करेगा तो मैं तेरे को एम्परर बना दूंगा। बुद्ध अशोक जो थे उस टाइम तो सनातनी थे ना, और अशोक ने जब इस बात को, क्योंकि अशोक के सामने प्रॉब्लम बहुत तरह की प्रॉब्लम थी। वो एक सूबेदार ही था और वो क्राउन प्रिंस भी नहीं था। सुषुम्न जो था वो क्राउन प्रिंस था, लेकिन अशोक ने इस तरह का एक संधि किया, और संधि के बाद में फिर ये बुद्ध धर्म को उसको अंगीकार किया है। और यज्ञों के मामले में चूंकि ब्राह्मण जो थे और वैदिक जो थे उनकी डोमिनेंस बहुत थी राज के ऊपर, इसलिए वैदिक यज्ञों को उन्होंने डिक्रीज किया, और ब्राह्मणों को मांसाहार वगैरह की, ये जो वाजपेयी यज्ञ वगैरह होते थे ब्राह्मणों के, उनसे उनको एक तरह का वो करा। और वो बात लंबी चली जाएगी, वो हिस्ट्री का पार्ट है। और जो दूसरा काम हुआ वो हुआ कनिष्का के टाइम में। अब लिखा गया है बाद में, तो बाद में जो लिखोगे तो आप फिर प्रिजुडिस्ड हो बेसिकली। इसलिए देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस दैट ही वाज प्रो वैदिक और ही वाज अगेंस्ट वैदिक। बुद्ध के बारे में नहीं कह सकते actually, but Bauddha Vedanindaka, they say that Bauddha Vedanindaka, what a point I am trying to make, in irrespective of Buddha or the Shakyamuni Buddha, Siddhartha Gautam Buddha, and let's not get into those controversies. Basically yajna ka matlab, whenever we talk, since we are talking in English, yajna in English is called sacrifice basically. तो वो भी बात है, वो वहां से ले रहे हैं ना, वो सैक्रिफाइस किसका, जो इब्राहिम ने किया। No, anyway, that is okay. Let's not even get into that Abrahamic कुर्बानी। देखिए सुनिए, क्लियर कट बोल देते हैं। कुर्बानी, सैक्रिफाइस और यज्ञ, तीनों का कहीं कोई, उनका दोनों का भले ही कोई मिलान हो, लेकिन यज्ञ का कोई लेना देना उनसे नहीं है। अब यहाँ पे पशु बलि को, अब देखिए आप हिस्टोरियन से क्या लिखा है कि यज्ञ में पशु बलि हो रही थी। यज्ञ में पशु बलियों का क्या काम है? अश्वमेध का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि अश्व की बलि दी जाती थी, जबकि असल बात यह कि अश्व की बुद्धि जहां तक जाती है वहां तक वो राज का विस्तार करे और जाए, जहां तक उसको खुला छोड़ दिया अब तो चला जा। अश्व को, अब फिर लंबी चली जाएगी बातचीत, अश्व को हमारे यहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमन उसके नजदीक यदि कोई प्राणी है तो वो गाय है और घोड़ा है। और हमारे देशी भाषा में कहते हैं कि मात पिता जिन घोड़ो घणु नहीं तो थोड़ो, यानी माता और पिता की जो गुण है, जो जनरेशन है, उसमें घोड़ा और मनुष्य एक तराजू में तो ले गए हैं। ये बात साइंटिफिक हो, जो साइंस के लोग हैं वो जांचें कि एक बात सही है क्या, लेकिन घोड़े को मनुष्य के बहुत नजदीक बताया गया है। अब ये जेनोलॉजी वाले करेंगे इस बारे रिसर्च, क्या क्या मामला है। गाय को बहुत नजदीक माना गया है, तो ये बेसिक बात, ये वेदा का मतलब ये था। अब ये गोमेद नाम से एक दवाई बनाने लग गए लोग बात, आप देखिए जरा, गाय के लीवर में जो कुछ है उसमें गोमेद बोलने लग गए उसको, जबकि ऐसा है नहीं। तो कई तरह के यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, और बात करने से वो बातें खुलती भी हैं। अब कई बुद्ध को कई लोग गयासुर कहते हैं, कई विद्वानों ने गयासुर कहा है, लेकिन वो गलत है। Anyway, the point I am trying to make is, it's not a selfish thing as it is understood. It is about sacrifice, that is about tyaga. Tyagaineke namurtatva manasahu, that's what Upanishad says. And any yajna is about tyaga, and Upanishads are always talking about sacrifice, doing it to others, paropakar karo, and lokasangraha karo. So that इसी में तुम्हारा भलाई है. That's what is the only religion which was talking about, and we talked about compassion. The Brihadaranyaka talks about datta, damyata and dayatvam. It talks about. So it is all about sacrifice, and hence it is Sanatan, and hence it is the most secular, if at all any विचार। अब वो सेक्युलर की बात में बात क्या आ जाएगी कि ये जो हिस्ट्री आपके सामने रखी हुई है, ये इंटेंशनली लिखवाई गई है, उन्हीं स्कॉलर्स को पैसा दिया गया है जो कि ये सब लिखते, नरबली का लिखते, घोड़े की बलि का लिखते, उन्हीं को पैसा मिला है। बाकी हिस्ट्री को तो कहीं रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, लाइब्रेरीज में रखा ही नहीं गया। तो वही वाली बात है। कंक्लूड करेंगे, और भाटे साहब कुछ लास्ट कमेंट करना चाहते हैं। जी भाटे साहब।
Yeah, I have done a lot of research on Buddhist philosophy, and I can give तो a करते whole रहेंगे lecture बातें। on अब comparative analysis between Vedas. Yeah, between Vedas and Buddhist philosophy, I can give a whole lecture. But apart from that, my point is I started practicing Vipassana because from a pragmatic point of view, वो कुछ भी हो, if the practice of this kind of meditation can take me to up to Sampradhyana Samadhi, then I would do it. Finished. I mean, this Of is a course. pragmatic way of looking at it. Sapadakoti laya And I prakaram. did that. ऐसा है सर। Yeah. See, ये तो आ रहा हूं, Sapadakoti laya prakaram. आ रहा हूं नाडकर्णी साहब, आ रहा हूं। Adinath has said there are 1.5 crore methods of doing it. So it is not अब मैं this जाना नहीं or चाहता वहां पे। non-Buddhist. गोरखनाथ को गोरख धंधा क्यों कहा जाता है? हाँ, तो उसके there is a lobby also for it, and of course what is प्रणम्य इसलिए तो श्री कहा गया ना कि गुरुनाथम। इतनी ध्यान की इतनी विधियां गोरख ने बना दी कि बाद में लोगों को समझ में नहीं आया कि करे तो आखिर क्या करें। तो ये भी वाली बात है। नहीं, हमारे यहाँ इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सर जी नहीं, लय प्रकार जो है इसमें सब सपाद कोटि लय प्रकार में गोरक्षनाथ जी ने एक ही मेथड बताई है, वो जो प्रमुख है, and you will find it very beautifully delineated in all the medieval texts. ऐसे भी नहीं कि he was not a Mahaguru for nothing. And the second point I want to make is, if you have read the Hanumat Nataka, you will see the beautiful way in which all the deities of India, all the great Purushas have been taken as Avishkars of Hari. एंड वो होयसालेश्वर का जो मंदिर है कर्नाटक में, उसके लिंटेल पर लिखा हुआ है। एंड अपेरेंटली दिस श्लोका दामोदर मिश्रा, आई थिंक, is a Maithili Brahmin who has written it in the 9th century. Incomparable beauty and incomparable compassion towards every form of seeking, which does not divide, And in the next episode, I will take the liberty of citing that beautiful 4-line verse, which is praised by none other than the Periyaval of Kanchipuram as one of the greatest epiphanies of India. Okay? Definitely. With that, I'm not saying it for or against, but I have also done a lot of work on this incidentally in the last few days. And I was looking at my notes, but then I said it requires a little more elaboration. But next episode in concordance with whatever we have been discussing. Thank you. नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे। तो कंक्लूड कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे प्रोफेसर बलराम सिंह जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर श्रीराम जी दरबा, प्रोफेसर अनिल जी भाटे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।